and then assuming that Aisha wasn't 9. Now, the evidence against that is quite strong as well, that Aisha may not have been 9. But the point is, forget about whatever Muhammad was teaching or what kind of Islam do we have today, whether that's true or not. But the point is what these people think. As many know already, there was always this pedophilia claim about Islam, that Muhammad was a pedophile. To believe in a religion that was formed by a man. Muhammad married a 6-year-old girl and bedded her when she was 9. I shouldn't get in trouble for saying this. Well, the founder of the religion of peace did it. मैसेंजर मोहम्मद ने बीबी आयशा से शादी की थी जब वो 6 साल की थी और पूरा सेक्सुअल काम किया था उसके साथ जब वो 9 साल की थी। हदीस में लिखा हुआ है कि वो ही हैड इंटरकोर्स विद हर व्हेन शी वाज 9। बीबी आयशा जो मैसेंजर मोहम्मद की जो बीवी थी, छोटी वाली, जो चाइल्ड ब्राइड है। जी बिल्कुल, 6 साल की जो शादी जो की थी उसके साथ, बदबख्त कमबख्त के साथ। इसीलिए नीरज जी, आई डू नॉट एक्सेप्ट इस्लाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक साइंस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नॉन बिलीवर्स इस बात पर तनकीद करते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 50 साल के थे जब उनकी शादी बीबी आयशा के साथ हुई थी, जब वो 6 बरस की थी, और विदाई उस वक्त हुई थी जब वो 9 बरस की थी। और ये उनका दावा है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेडोफाइल थे। ये लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, ये कम वक्त हैं, ये बदबख्त लोग हैं, ये कम अक्ल लोग हैं कि बिना कोई इल्म के यानी इस किस्म की बेहुदा बकवास करते हैं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इन्हें इस्लाम के कायदे कानून यानी जिसे लॉज एंड रेगुलेशंस कहते हैं, इनका कोई इल्म नहीं है। इससे पहले कि मैं इन सवालों के जवाब दूं, मैं ये चाहता हूं कि दीगर मज़ाहब की किताबों में जिनसी ताल्लुकात यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के मामले में क्या कहा गया है और क्या लिखा गया है उसे जान लेते हैं। Let us see what has been mentioned in other religious books about sexual relationships of great religious personalities, their behavior and attitudes towards that. चलिए सबसे पहले हिंदू धर्म की स्क्रिप्चर्स से देखते हैं। Lord Brahma, the creator, married his own daughter. Sakamkoti.org, and study.com, and speakingtree.in. So I have taken the reference from speakingtree.in. मैं speakingtree.in से ये रेफरेंस लिया हूँ और इससे मैं बताते हैं कि ब्रह्मा is the creator of the universe. Saraswati, who became the wife of her own father, was actually the daughter of Lord Brahma. So according to Saraswati Purana, Brahma and his daughter Saraswati lived as husband and wife, indulging in incest for 100 years. They had a son, Swayambhumaru, and he married his own sister called Starpa. So the incest of Brahma's son and daughter, Brahma got 2 grandsons and 2 granddaughters. मेरे हिंदू भाइयों से ये सवाल है कि इसको गौर से सुनिएगा कि इन स्क्रिप्चर्स के बिना पर क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में एक सगा बाप अपनी सगी बेटी के साथ और एक सगा भाई अपनी सगी बहन के साथ शादी कर सकता है। कई सालों से मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, आज भी मेरी उनकी दोस्ती है, हम आपस में साथ काम भी करते हैं। मैंने कभी भी ऐसा होते नहीं देखा है। कई 1050 साल पहले शायद ऐसा हुआ होगा, पर आज के दौर में ये नहीं होता है। ये बात याद रखिए कि इसको हम हिंदू धर्म का बेस नहीं बना सकते हैं। चलिए एक और केस देखते हैं। लॉर्ड विष्णु द प्रिजर्वर, ही चीटेड एंड रेप्ड हिज ओन डिवोटी वृंदा। speakingtree.in से जिसका रेफरेंस लिया गया है, लॉर्ड विष्णु डिस्गाइज हिमसेल्फ एज जलंधरा एंड टुक वृंदास चैस्टिटी, जिसका जिक्र स्कंद पुराना, शिव पुराना और ब्रह्म वैवर्त पुराना में भी और प्रकृति खंडा में भी इसका जिक्र लिखा हुआ है। इन स्क्रिप्चर्स के बिना पर हिंदू धर्म में क्या आप अपनी ही डिवोटी का रेप कर सकते हैं? ये सवाल आपके लिए है, इसका जवाब दीजिए। लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर मैरिड पार्वती एट द एज ऑफ 8. Even at the age of 8, the 3 maidens took to tapasya, and Devas took them one by one to Brahma, starting from the middle, one called Kautalya. Brahma, who understood that this was, Parvati was the one who was indeed worthy of marrying Paramashiva, who could not only demolish Mahishasura, but also beget a son that could annihilate Tarakasura. तो इन स्क्रिप्चर्स के बिना पर हिंदू धर्म में क्या आप 8 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं? चलिए इसका जवाब दीजिए। लॉर्ड इंद्र, द गॉड ऑफ स्वर्ग एंड द देवास, रेप्ड अहिल्या. Gautama woke up and went for his ritual bath and all the other ritual activities. Indra entered in his ashram under devious disguise from Gautama and deceived Ahilya to have sex with her. यानी इंद्रा ने अपना भेष बदल कर
गौतमा की शक्ल में अहिल्या के पास जाते हैं और वो अपना हैव सेक्स विद हर। ये स्टोरी का जिक्र ब्रह्म पुराणा में भी है, ब्रह्म वायुवर्त पुराणा में भी है, कृष्ण जन्मखंडा में भी जिसका जिक्र है। तो इन स्क्रिप्चर्स के बिना पर हिंदू धर्म में क्या आप किसी को भी धोखे से उसका रेप कर सकते हैं? इसका जवाब आप दीजिए। लॉर्ड रामा, द एम्बॉडीमेंट ऑफ chivalry and virtue, the seventh incarnation of the Vishnu, married a 6-year-old Sita. Here is what Sita says to Rama in Aryanakanda. Sita said that when Rama left Ayodhya for exile, Rama was 25-year-old and Sita said that she was 18-year-old. Here is what she says to Hanumana. I stayed in Rama's house for 12 years, enjoying the worldly pleasure. So if you do the math, the Sita says to Ramana, she is 18-year-old, and she also says to Hanumana that she is in the Ram's house for 12 years. So if you do the math, when she was got married, she was 6-year-old. तो इन स्क्रिप्चर्स के बिना पर हिंदू धर्म में क्या आप 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं? इसका जवाब आप दीजिए। लॉर्ड कृष्णा, worshipped as the 8th incarnation of the Hindu god Vishnu, married more than 16,000 women. After defeating Narkasura, the 16,100 women were released by Krishna, and everyone committed themselves that they would either marry Krishna or commit suicide. So Krishna, Lord Krishna, married them. So the Krishna has 16,108 wives in total. So the in scriptures के बिना पर हिंदू धर्म में क्या आप 16,000 शादी कर सकते हैं? एक और केस देखते हैं। लॉर्ड सूर्य, the sun god, he raped virgin Kunti. इसका जिक्र श्रीमद् भगवद गीता में है। तो इन स्क्रिप्चर्स के बिना पर हिंदू धर्म में क्या आप किसी का भी रेप कर सकते हैं? मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, इतने साल से मेरी उनकी दोस्ती है, लेकिन मैंने ऐसे होते नहीं देखा है। चलिए अब क्रिश्चियनिटी की तरफ रुख मोड़ते हैं और देखते हैं कि इन स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है। फॉर रेफरेंस, see the published paper in Sinful Love Lives of Catholic Popes Throughout History by Peter Preska. ये पेपर लिखा है कि, और ये पेपर कहता है कि 2000 साल की कैथोलिक चर्च की हिस्ट्री में, यानी तारीख में, तकरीबन 740 में से 24 पोप्स, यानी 24 आउट ऑफ 740 पोप ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने औरत और मर्द के से जिनसी ताल्लुकात बनाए थे, जिसमें पहले पोप सेंट पीटर का भी नाम शामिल है। They had sex with women and men and also fathered children, including the first Pope Saint Peter. So historyofyesteryear.com में आप चेक कर सकते हैं। इसका पहला देखते हैं। Pope Alexander VI, he ruled 1492 to 1503. He supposedly had a sexual relationship with his beautiful daughter Lucretia, and he threw a famous banquet of chestnut. To spice up the party, Pope Alexander VI announced the prize would be given to a man who could have sex with the courtesans most often. चलिए इसमें एक और केस देखते हैं। पोप Julius II, 1503-1513, that was reign. He had the French disease syphilis from Rome's male prostitution. So on Good Friday, nobody could kiss his feet because he was completely covered by rashes. चलिए एक और केस देखते हैं। The Vatican in Benedict IX became a pope in 1032 at an age of 20 after Benedict's father got him elected through bribery. 12 years the Rome had enough debauchery, so they expelled him. Then Benedict IX then came back to Rome in 1045. He regained his papacy. Benedict IX wasn't the first gay pope, but he wasn't the only one, because Pope Paul II died while being sodomized by a page. So Pope Pope IV, reigned 1471 to 1484, appointed his male lovers as cardinals. चलिए एक और केस देखते हैं। The Vatican was a whorehouse. Pope John XII raped female pilgrims and even had sex with his niece. So on May 4th, 964, he had sex with a married woman. Unfortunately for the Pope, he was caught by the woman's jealous husband and thrown out of the window. He died shortly afterward. एक और केस देखते हैं। Pope Boniface VIII reigned 1294 to 1303. He regularly had sex with men and women. And the story goes that the two of his male lovers publicly quarreled on the streets of the Rome, who had the right to call himself the Pope's whore. So he had a threesome with his mother and her daughter, thus committing incest and adultery and violating the holy vows of celibacy at the same time. And he had sex with the mother and daughter at the same time. Boniface VIII notoriously declared that having sex with young boys was no more than a sin than rubbing one hand against the other one. So now you know what did happen. So आप अब जान चुके हैं
कि इन्होंने क्या किया था, ठीक है। पेडोफाइलिया इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोम, द कलेक्टर.com में जिसका जिक्र है, पेडोफाइलिया से कहते हैं डिफाइंड एज अ सेक्सुअल अट्रैक्शन टू चिल्ड्रन, but the ancient Roman Greeks openly practiced forms of pedophilia, although it was not legally or morally regarded as it is today. There is the practice of pederasty in ancient Greek. Pederasty is defined as a sexual relationship between an adult man and a pubescent or adolescent boy. In the corrected.org, again, उसी का reference दिया गया है. Now let us turn to our present world and see the child bride say, okay. UCAnews.com में जिसका जिक्र है, from where she was 11-year-old Jezzel was forced to live with an older man of almost 40 years, and she was treated like a wife, living in the house with him, cooking, cleaning, and being sexually abused, and she became pregnant at 14 and had a baby. So Rosita was an 11-year-old, another case, and which has target of the sexual desire at the age of 45-year-old man. He paid dowry to Rosita's parent, and she became a child bride, and she got pregnant and had a baby at the age of 14. चलिए देखते हैं UNICEF USA.org. More than 200,000 minors were married in the US between 2000 and 2015. So 25 states in the United States of America have no minimum age requirement for marriage. Now look at this picture. Look at him, he's 65 and she is 12. You be the judge. In the present world, in Western countries, even 10-year girls are getting married, so much older men, and are getting raped. One such case is that a 5-year-old girl gave birth and became the world's youngest mother in 1939. So historydaily.org has given Medina at the age of 5 years, 7 months and 21 days, she gave birth to a by a cesarean section on 14th May 1939. तो मेरी इल्तिजा है कि इससे पहले कि आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा की शादी पर तनकीद करें, एतराज़ करें, शिकायत करें, यानी क्रिटिसाइज, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लेन करें, मेहरबानी करके इन अजीम तरीन मजहबी शख्सियतों के जो जिनसी ताल्लुक़ात थे उनको नज़र में ज़रूर रखिएगा, उन्हें मत भूलिएगा। ऐसी कोई भी हरकत या तर्ज़ अमल अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है. This type of conduct, this type of behavior, this type of manners, he didn't do that kind of thing. So एक बात याद रखिए कि इस्लाम में लड़की की शादी के लिए एक उम्र मुकर्रर है, इससे पहले कि कोई मर्द उससे शादी कर सके. चलिए कुरान से इसको मालूम कर लेते हैं. चैप्टर 4 सूरत निसा वर्स 6 में जिसका जिक्र है, and try orphans as regards their intelligence until they reach the age of marriage. If you then find sound judgment in them, please release their property to them. Chapter 24 Surah An-Nur verse 58 में फिर जिसका जिक्र है, let your legal slaves and slave girls and those among you who have not come to the age of puberty ask your permission before they come to your presence on 3 occasions. Before Fajr, that is morning prayer, and after you put off your clothes for the noonday, that is when you want to take a rest at the noon time, and after the Isha, that late night prayer. And Allah make clear the ayat to you. Chapter 24, Surah An-Nur, verse 59 में फिर इसका जिक्र है, and when the children among you come to puberty, then let them ask for permission as those seniors to them in that age. So ऊपर जिस आयत में ये कहा गया है कि ट्राई ऑर्फन्स, यानी उसका मतलब ये है कि उन्हें कोशिश करके अच्छी तरह से आजमा लो, उन्हें टेस्ट कर लो, जांच लो और यकीन बना लो कि ये अपनी पोख्तगी को पहुंच चुके हैं, ताकि वो अपना फ़राइज़ यानी जिसे कहते हैं ड्यूटीज अंजाम दे सकें, कानूनी तौर पर अपने मामलात अंजाम दे सकें, ये इंतज़ाम खुद कर सकें. जहाँ ये कहा गया है कि until the reach the age of marriage, इसका मतलब यहाँ ये निकलता है कि जब तक ये शादी के काबिल ना हो जाए, यानी बलोगत को पहुँचते, जिसे कहते हैं प्यूबर्टी, यानी बालिग ना हो जाए, कि इस ज़रिए से पोख्तगी को ना पहुँच जाए और दुरुस्त फैसला लेने के काबिल हो जाए, फिर उनकी जायदाद उनको सौंप दो. Until they have become eligible for it through puberty and legal age limit through maturity, then if you find sound judgment in them, release their property to them. Puberty is the period during which adolescents reach sexual majority and become capable of reproduction. यानी puberty जिसे कहते हैं बलोगत, जिसे कहते हैं बालिग होना, ये एक ऐसा थ्रेशोल्ड है जहाँ पर वो sexual maturity को पहुँचते हैं and they become capable of producing. So come to puberty, let them ask for permission. जब बालिग हो जाएं या बलोगत को पहुंच जाएं तो फिर बहुत सारे मामलात में उन्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा की शादी के वक्त जो वाक़यात पेश आए थे, चलिए उन्हें देखते हैं. सहीह अल बुखारी वॉल्यूम 5
नंबर 3894 में जिसका जिक्र है, narrated Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा, my marriage contract with the Prophet Muhammad ﷺ was written when I was girl of 6-year-old. We came to Medina and we dismounted at the place of Bani al-Harith bin Khazraj. Then in their house I saw some Ansari woman who said, best wishes and Allah's blessing and a good luck. Then she entrusted me to them and they prepared me for the marriage. Unexpectedly, Allah's messenger came to me in the forenoon and my mother handed me over to him, and at that time I was a girl of 9 years of age. चलिए एक और हदीस देखते हैं, सही अल-बुखारी वॉल्यूम 7 बुक 62 नंबर 64 में जिसका जिक्र है, narrated Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा that the Prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old, and then she remained with him for 9 years. इन हदीसों से ये साफ जाहिर होता है कि बीबी आयशा 6 बरस की थी जब उनकी शादी हुई थी, और शादी मुकम्मल जिसे कहते हैं कंज्यूमेटिंग मैरिज हुई थी जब वो 9 बरस की थी। एक हदीस है जिसके बिना पर नॉन बिलीवर्स ये कहते हैं कि बीबी आयशा नाबालिग थी। चलिए वो हदीस को देखते हैं, सही अल-बुखारी वॉल्यूम 8 बुक नंबर 73 नंबर 151 में जिसका जिक्र है, बीबी आयशा narrates that I used to play with dolls in the presence of Prophet and my girls also used to play with me. When Allah supposedly used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. यदि बीबी आयशा जब अपनी गुड़ियों के साथ खेलती थी, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एंटर होते तो गड़ियाँ बच्चियाँ उनके जो फ्रेंड्स से चली जाती थी, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुलाकर उन्हें खेलने लगाते थे। तो फतेह अल-बारी पेज 143 वॉल्यूम 13 में ये कहा गया है कि the playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl not yet reached the age of puberty. याद रखिए कि फतेह अल-बारी तकरीबन 825 हिजरी में हाफिज इब्न हजर अल-अस्क़लानी ने लिखी थी। इब्न कसीर और इमाम अल-शाफ़ई बुलूगत की उम्र 15 साल रखते हैं, तो ये उनका अपना ख्याल है। कई नॉन बिलीवर्स इनका हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि बीबी आयशा नाबालिग थी जब इनकी शादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई थी। हकीकत ये है कि बीबी आयशा शादी से पहले बालिग थी। चलिए उसके सपोर्ट में ये हदीस देखते हैं, सही बुखारी वॉल्यूम 7 नंबर 476 में जिसका जिक्र है, नरेटेड आयशा, the wife of the Prophet, I had seen my parents following Islam since I attained the age of puberty. Not a day passed, but the Prophet visited us both in the morning and the evening. चलिए एक और हदीस देखते हैं, सही मुस्लिम बुक नंबर 8 नंबर 3311 में जिसका जिक्र है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा reported that Allah supposedly married when she was 7 years old and he was taken to his house as a bride when she was 9 and her dolls were with her. And when she died, she was 18 years old. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा को गुड़ियां अपने घर ले जाने और उनसे खेलने की इजाज़त क्यों दी थी, इसकी वजह जानने के लिए यह हदीस देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए सही मुस्लिम बुक नंबर 24 नंबर 50 to 45 में जिसका जिक्र है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा reported that Gabriel has made a promise with Allah's messenger to come at definite hour. That hour came, but he did not visit him. Then Gabriel came and Allah's messenger said to him, you promised me and I waited for you, but you did not come. Whereupon he said, it was the dog in your house which prevented me, for we do not enter a house in which there is a dog or a picture. So remember, Gabriel Islam and Jibreel Islam is one of the angels of mercy. Yeah. इस हदीस मुबारका से जाहिर होता है कि रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते हैं जिसमें कुत्ते और तस्वीर मौजूद होते हैं। इस हदीस से इस हादसे के बाद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुड़ियां और तस्वीरें ममनुआ करार दी थी। सही अल-बुखारी वॉल्यूम 7 नंबर 59-52 में इसका जिक्र है, नरेटेड आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, the prophet never used to leave in the house anything carrying images or crosses, but he obliterated it. एक और हदीस है, सही अल-बुखारी वॉल्यूम 7 नंबर 59-54 में इसका जिक्र है, नरेटेड आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, messenger sallallahu alaihi wasallam returned from a journey when I had placed a curtain of mine having some images over the chamber of mine. When Allah's messenger saw it, he tore it down, and the people who will receive the severest punishment on the day of the resurrection will be those who try to make the likes of Allah's creation. So we turn it into one or two cushions. तो इन हदीसों से ये वाज़ा हो जाता है कि ये हदीसें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा की शादी के बहुत बाद बोली गई थी, क्योंकि ये बीबी आयशा अपने घर के काम खुद कर रही थी, घर के काम का जो भी होता है वो खुद कर रही थी। अल्लाह के रसूल जब सफ़र पर गए हुए थे वो बाहर थे, जब वो वापस आए तो इन्होंने ये सारा वाक़या सुना। सो अभी चलिए मालूम करते हैं कि मेडिकल साइंसेस से व्हाट इट सेज अबाउट मेंस्ट्रुएशन।
clevelandclinic.org में जिसका एक पेपर पब्लिश हुआ है, it states that people start menstruation at the age of 12 and averagely age of 12. However, you can begin menstruation as early as 8 and as late as 16 years. So regarding women to get married at a very young age, यानी औरतों यानी बच्चों यानी जवान लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाने के बारे में, let us see Islam, the Basics by Professor Colin Turner of Durham University. He is an expert in Islam in the Middle Eastern Studies Department. It states, ये particular book state करती है कि marriage between older man and a young girl was customary among the Bedouins, as it is still in many societies across the world today. It was not unheard of in Prophet Muhammad's time for the boys and girls to be promised to each other in marriage almost as soon they were born, particularly if the union is of direct political significance to the family is concerned. यानी जो अगर ये ऐसा यूनियन जिसमें कि political significance हो तो वो families के लिए शादी बहुत जल्दी की जाती थी, considering that such marriages were an important means of survival in the harsh desert environment and that people had a much low life expectancy that they do have now. चलिए अब जितने भी चीज़ें हमने अभी गो थ्रू की हैं, चलिए तफसील से इन बातों का खुलासा कर लेते हैं। पहली चीज़, एक अंसारी औरत ने बीबी आयशा को शादी के लिए तैयार किया था क्योंकि वो शादी के काबिल थी। बीबी आयशा की माँ ने बीबी आयशा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल के हवाले किया था। इसका मतलब इस शादी में उनके माँ बाप की रजामंदी की मौजूद थी। बीबी आयशा बालिग थी, ये साबित है। अगर ये बात मानकर चलते हैं कि बीबी आयशा नादान थी यानी इमेच्योर थी, तो वो कोई यतीम नहीं थी, यानी शी वाज नॉट एन ऑर्फन, और उन्हें कोई जायदाद इस तरह से कि यतीमों को जायदाद हैंडल की जाती है उस तरह से नहीं दी जा रही थी। उन दिनों ये बहुत आम बात थी कि कम उम्र की लड़कियों की शादी बहुत बड़े उम्र के मर्दों से कर दी जाती थी। ये सारे क्लेम्स बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तारीख ने भी इन क्लेम्स को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। इस्लाम में जो शरई कानून होता है उसके मुताबिक लड़की के बालिग होते ही उसकी शादी कर दी जा सकती है। उसी बिना पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, बीबी आयशा से शादी की थी, और ये 100% जायज़ है। और जो लोग ये कहते हैं उन्हें पेडोफाइल कहते हैं, ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, ये बदएहसास लोग हैं। अब देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाअल्लाह ताला और भी ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगी। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।